अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा इंट्रोडक्शन होगा Oppo Reno 9 Pro Plus के बारे में और इसकी डिटेल में हम स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। आइए चलिए बात करते हैं। Oppo Reno 9 Pro Plus. Release 2022, the 2nd of December, 192 grams, 8mm thickness, Android 13, Colorus 13256 GB, 512 GB storage, no card slot, 6.7, 1080 times 2412 pixels, 50 MP, 2160p, 16 GB RAM, Snapdragon 8 Plus Gen 1 4007. 100 mAh network technology, GSM, CDMA, HSPA, CDMA 2000, LTE, 5G LAUNCH announced 2022, the 24th of November, status available. Release 2022, the 2nd of December, body dimensions 161.5 times 73.6 times 8mm, 6.36 times 290x031 in, weight 192 grams, 6.7 ounces, build glass front, Asahi glass, aluminum frame, SIM dual SIM, nano SIM, dual standby, display type AMOLED, 1B colors, 120 Hz, HDR10 plus, 500 nits, type, 800 nits, HBM, 950 nits, peak, size 6.7 inches, 108.0 square centimeter, approximately 90.9% screen to body ratio, resolution 1080 times 2412 pixels, 20:9 ratio, approximately 394 ppi density. Protection, Asahi glass, AGC DT Star 2 platform, OS Android 13, Colorus 13 chipset, Qualcomm SM8475, Snapdragon 8 Plus Gen 1, 4nm, CPU octa-core, 1 times 3.0 GHz Cortex-X2 and 3x2.75 GHz Cortex-A 710 and 4 times 2.0 GHz Cortex-A 510, GPU Adreno 730, memory card slot no, internal 256 GB, 16 GB RAM, 512 GB, 16 GB RAM, UFS 3.1 main camera, triple 50 MP, f1.8, 24mm wide, 1.56, 1.0 m multi-directional, PDAF, OIS 8 MP, f2.2, 120, ultra-wide, 14.0, 1.12 m2 MP, f2.4, depth, features LED flash, HDR, PANORAMA video 4K 830, 60 fps, 1080p 830, 60, 120, 240 fps, Euro eyes, OIS, HDR selfie camera, single 32 MP, f2.4, 22mm wide, 2.74, 0.8 m, AF features panorama, HDR video, 1080p 830 fps, Euro eyes, sound loudspeaker yes, with stereo speakers, 3.5mm jack, no 24-bit, 192 kHz audio comms, WLAN, Wi-Fi 802.11a B, G, N, AC 6, dual band, Wi-Fi direct, Bluetooth 5.2, a 2DP, LE, apps HUD positioning, GPS, L1 plus L5, GLONASS, L1 BDS, B1I plus B2A plus BC, Galileo, E1 plus E5A QZSS, L1 plus L5, NFC yes, SA, HC, UICC, NFC SIM, infrared port yes, radio no, USB Type-C 20, OTG features sensors, fingerprint, under display, optical, accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum. Battery type LiPo 4700 mAh, non-removable charging, 80W wired, PD, QC3, 45% in 10 minutes, 100% in 31 minutes, advertised, reverse wired MISC, colors black, gold. Mint models, PGW 110, price $676.81.
अब हम इस डिवाइस की सबसे पहले पिक्चर्स को देखते हैं और इसकी स्पेसिफिकेशन को डिस्कस करते हैं, कैसी स्पेसिफिकेशन इसमें दी गई है। सबसे पहले बात करेंगे इसके स्क्रीन साइज़ के बारे में। काफ़ी अच्छा स्क्रीन साइज़ दिया गया, 6.7 इंच स्क्रीन साइज़ दिया गया इसमें। जो इसके पिक्सल हैं 1080 मल्टीप्लाई बाई 24 12 पिक्सल दी गई हैं। जो इसकी स्क्रीन रेजोल्यूशन वो भी बहुत अच्छी दी गई है। जो PPI डेंसिटी है वो 394 PPI डेंसिटी दी गई है। इसमें आपको काफ़ी अच्छी पिक्चर क्वालिटी देखने को मिलेगी और रेजोल्यूशन भी अच्छी मिलने वाली है पिक्चर्स की। अब कैमरे की बात करते हैं। कैमरा जो साइज़ है काफ़ी अच्छा दिया गया, इसमें 50 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया, जो आपको एक क्वालिटी वाली अच्छी पिक्चर बनाने में हेल्प करेगा। काफ़ी अच्छी पिक्चर मिलने वाली है आपको इसमें। अगर डे लाइट में पिक्चर्स बनाते हैं आपको अच्छी रेजोल्यूशन और अच्छा कलर कम्बिनेशन देखने को मिलेगा इसमें आपको, और आप एक अच्छी क्वालिटी वाली पिक्चर बना सकते हैं। अगर समय में बनाएंगे तो अच्छे कलर कम्बिनेशन मिलेगा आपको और ब्राइटनेस वाली पिक्चर्स मिलेंगी और डिटेल में मिलेगी आपको पिक्चर्स। अगर नाइट में बनाते हैं तो आपको डिटेलिंग उसमें कम मिलेगी और थोड़े डार्क कलर्स में पिक्चर्स मिलेंगी। आगे बात करते हैं हम रैम की, तो 16 GB रैम में दी जाती है ये डिवाइस आपको, और इसके साथ लेटेस्ट चिपसेट लगा हुआ स्नैपड्रैगन 8 Gen प्लस Gen 1 लगा हुआ साथ में। और अगर बात करें इसके 16 GB वेरिएंट की तो आपको इससे काफ़ी अच्छी स्पीड मिलने वाली है, और साथ में जो लेटेस्ट प्रोसेसर लगा हुआ वो आपकी डिवाइस को और आला स्पीड और परफॉर्मेंस देगा। और अगर इस डिवाइस से आप गेमिंग वगैरह करती हैं तो आपको अच्छी ग्राफिक्स देखने को मिलेंगे, अच्छी स्पीड देखने को मिलेगी। आपको इस डिवाइस से गेमिंग वगैरह करने में बहुत अच्छा लगेगा और अच्छी स्पीड मिलने वाली है। अगर बैटरी की बात करें तो बैटरी 47 mAh की लगी है। अच्छा बैटरी बैकअप मिलेगा इस डिवाइस से आपको, 4 घंटे का बैटरी बैकअप मिल सकता है अगर आप गेमिंग खेलते हैं। अगर रेगुलर आप यूज़ करते हैं तो आपको 1 या 1.5 दिन मिल सकता है बैटरी बैकअप के लिहाज से। और ये 2 वेरिएंट में आता है, 226 GB और 512 GB स्टोरेज में। इसमें कार्ड स्टॉक नहीं होती, एंड्रॉयड 13 आता है, क्लॉज 13 होता है इसमें। अगर वेट की बात करें तो 192 GB वेट है, और थिकनेस की बात करें 8 mm थिकनेस है। अगर इसकी साइड्स देखें तो आपको काफ़ी शार्प साइड मिलेंगी, काफ़ी स्लिम लग रहा है और लाइट वेटेड फ़ोन लग रहा है। अगर बैक साइड पे देखा जाए तो 2 कैमरे के लेंस लगे हुए हैं, साथ में सेंसर लगा हुआ और LED फ्लैश दी गई। काफ़ी स्टाइलिश अंदाज में एक साइड पर पुट किया गया, देखने में बहुत स्टाइलिश और यूनिक डिज़ाइन लग रहा है आपको। और देखें तो ओवरऑल काफ़ी अच्छी डिवाइस है। इसमें आपको अपर साइड पे जो है सेंसर लगे दिखाई देंगे और नीचे चार्जिंग पोर्ट दी गई है, साथ में 3.5 जैक नहीं मिलेगा आपको। और देखें तो इसके साथ आपको जो चार्जिंग वायर मिलती है 2.0 चार्जिंग OTG वाली मिलती है आपको, और जो चार्जर मिलता है 80 वाट का चार्जर मिलता है, जो आपकी बैटरी को 9 मिनट्स में 45 मिनट्स की चार्जिंग देता है, 45% चार्जिंग देता है। अगर आप इससे चार्ज करें 31 मिनट के लिए तो आपको 100% की चार्जिंग मिलेगी। काफ़ी जल्द चार्ज हो जाएगा आपका सेट, और आपको ओवरऑल एक अच्छी डिवाइस मिल रही है जिस प्राइस टैग में ये आ रहा है, और देखने के लिहाज से भी काफ़ी अच्छी डिवाइस है। और मार्केट में आपको ये 3 कलर्स में देखने को मिलेगा, काफ़ी अच्छे कलर्स में देखने को मिलेगा। ओवरऑल एक अच्छी डिवाइस है। अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमारे चैनल का नाम है गैजेट टेक रिव्यूज़।